Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today I am going to discuss the functions of parathyroid hormone. Parathyroid hormone we are going to discuss. Before that, one ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم वल्लाहु गफूरुर रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप सबसे कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो फत्तबिऊनी, फिर मेरी पैरवी करो, फिर इत्तिबा करो मेरी। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयगफिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। तो अल्लाह से मोहब्बत का मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है, अल्लाह के अहकामात को पूरा करना। अल्लाह बात समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to talk about the parathyroid hormone. Parathyroid hormone is produced from the parathyroid gland. There are 4 parathyroid glands. They are behind each pole of the thyroid gland. Thyroid gland के पीछे 4, 2 ऊपर 2 नीचे। Each pole of the thyroid gland ये है, इसके पीछे 4 जगह पे ये लगे हुए हैं। डायग्राम में आ जाएगा। Size of the gland is 6 into 3 into 2 millimeters. 6 millimeters into 2 into 3. Appearance, naked eye appearance is like dark brown fat, and when you dissect, so it is difficult to find them because they are maybe mixed with the dark brown fat. So it is when some operation on the thyroid gland has to be performed. Thyroidectomy, we have discussed the thyroid diseases in which thyroidectomy is performed. So these glands have to be spared. They have to be identified, and they look like dark brown fat, and they have to be spared in the procedure. So removal of 2 glands or 3 glands out of these 4, it will lead to the reduction in the parathyroid hormone, and it will cause the decreased calcium level, as we are going to discuss the functions. But it is a transient, because the remaining gland will hypertrophy, and it will compensate, and it will be okay after some time, later compensated by the hypertrophy of the remaining gland. The gland consists of 2 types of cells. Chief cells, they produce the hormone, and then there are the oxyphil cells, no known function, they are just supporting cells. In the diagram we can see this is a parathyroid gland. 4 behind the posterior side of this yellow thyroid gland, and these are the 4 glands. So parathyroid gland located behind the thyroid gland, and this is the histology of that. It consists of the chief cells. These chief cells, they produce the hormone, and oxyphil cells, these are the bigger cells, they don't have any function, no known function. Probably they are just supporting cells, or they are degenerating these chief cells when they have performed their activity. Blood vessels are also visible. So this is parathyroid gland. Parathyroid hormone is produced from these parathyroid gland, which we are going. Parathyroid hormone, PTH, abbreviated as PTH, parathyroid hormone. It is a protein having 84 amino acids, and synthesized by the ribosome. Like every protein synthesis, transcription and translation process, and it is like most of the hormone, it is synthesized as pre-pro hormone of 110 amino acid. In original transcription, original translation leads to formation of 110 amino acid chain, which is a pre-pro hormone, and then it is cleaved. Some amino acids are cut, 20 amino acids are cut, and 90 amino acid pro hormone. Then in Golgi complex, it is converted into actual hormone, 84 amino acids. So that is the mechanism of synthesis. This hormone has got the molecular weight of 9500, and a small fragment of this same of 34 amino acid has been found to have some parathyroid hormone activity, but it is negligible. Actually, it is the 84 amino acid actual parathyroid hormone which is responsible for all physiological activity. The
it is responsible for the maintenance of main function of this parathyroid hormone is maintenance of the normal blood calcium level. Normal blood calcium level, and yesterday, previous lecture, we saw that it is 9 to 11 milligram per deciliter. Parathyroid hormone increases the blood calcium level. How it increases? That is the discussion for today. So it increases the blood calcium level by absorption. Our source of calcium in our body, storehouse, reservoir is the bones. In the previous lecture, पहले वाले lecture हमने देखा हुआ है. So resorption from the bone, removal of the salt from the bone, this is the first source, and then reabsorption from the renal tubule. Any calcium which is being filtered in the glomerulus is reabsorbed by the action of the parathyroid hormone. Second, and third is absorption from the GIT. ये भी हमने कल हमने बात देखा था 100 milligram daily average 100 milligram of new calcium is absorbed in 24 hours. So these are that is how this parathyroid hormone increases the blood glucose level. Resorption from the bone first, and then the conservation of this calcium by reabsorption in the kidney tubules, and also absorption from the GIT. All this will lead to increased blood calcium level. The most important mechanism to increase the blood calcium level is the removal of calcium from the bone. This occurs in two phases. One is rapid phase, immediately, quick phase, and the second is slow phase. Rapid phase, as we discussed in the previous two lectures, begins within minutes, and it is the activity of the osteoclast already present in the bones. And usually it is the resorption of those amorphous form of the calcium, not the crystalline one. Amorphous form of the calcium, that is calcium dihydrogen phosphate or monohydrogen phosphate present. So resorption of the mostly amorphous calcium salt and phosphate in the bone in the rapid phase. Immediately osteoclast they cause the easily exchangeable calcium, जिसको हमने नाम दिया था. Easily exchangeable calcium is the amorphous non-crystalline form, calcium monohydrogen phosphate and dihydrogen phosphate. Then there is slow phase. What is that? There is this takes a few days or maybe weeks to develop, and the formation of new osteoclast. This is the function of the already existing osteoclast in the bone, and this occurs slow phase. This occurs development of the new osteoclast, and then the absorption of the crystalline matrix as well as the salts are removed. Resorption of the bone itself, that is matrix. This is only salts removal, and in this slow phase or the long acting phase, there is resorption of the bone as a whole, that is even matrix is removed. Now rapid phase we can explain. Salt removed initially from the close vicinity of the osteocytes and osteoblasts. You know, osteoblasts are the bone forming cell, osteocytes are the entrapped osteoblast, inactive osteoblast in the osteoid. They, in the vicinity of these, there is the initial removal of the salt. How? ये कैसे होता है? This is important. All the osteocytes in the structure of the bone, all the osteocytes and osteoblasts, you will have to imagine, they are interconnected by the membranous extensions. उनकी cell membrane extend करके आपस में मिली हुई हैं in whole structure of the bone. Osteocytes and osteoblasts interconnected by the membranous extension, and these membranes, extensions of these membrane by which they are joined together, this membrane is known as osteocytic membrane. Osteocyte से बन रही है, osteoblast भी उसमें शामिल है, osteocyte से बन osteocytic membrane. So you will have to imagine this is a membrane extension from all the osteoblasts and osteocytes. ये membrane है. This membrane separates the bone fluid between the osteocytic membrane and the bone. Bone fluid is present, this membrane and the structure of the bone, बाकी bone जो है matrix है, उसके दरमियान जो fluid है, that is known as the bone fluid. This membrane, in this membrane, osteocytic membrane, there is active calcium pump.
जो क्या पंप कर रहा है, विच इज पंपिंग द कैल्शियम फ्रॉम द बोन फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. So active pump pumps the osteocytic membrane and keeps the calcium level in bone fluid lower than the extracellular fluid. बाकी extracellular fluid से this calcium pump is pumping the bone fluid, bone से remove कर रहा है calcium fluid से, इंटरस्टिशियल, वो भी एक्स्ट्रा सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो भी उससे रिमूव करके रेस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप कर रहा है. सो इट कीप्स द बोन फ्लूइड कैल्शियम ओनली 1/3 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैल्शियम अभी हमने बात की, दैट इज 9 मिलीग्राम पर डेसिलिटर. 9 मिलीग्राम तो ब्लड में है ना, उसका जो एक्सचेंजेबल कैल्शियम है वो तो थोड़ी है, 50%, ऑलमोस्ट 50% के करीब है या 59% के करीब है. सो दैट इज उससे कम है, तो बोन फ्लूइड में कम रखती है. दिस ऑस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन, पैराथायराइड हार्मोन का पहला काम जो है इस ऑस्टियोसिटिक पंप, एक्टिव कैल्शियम पंप को तेज कर देता है. दैट इज rapid phases. Active calcium pump is osteocytic membrane. Parathyroid hormone increases the activity of this osteocytic pump, which is pumping the calcium from the bone fluid into the rest of the extracellular fluid. So the calcium is pumped out of this extracellular fluid and replaced from the bone calcium. ये pump हो रहा है और bone fluid से extracellular fluid में pump हो रहा है और बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से. तो बोन फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ रहा है, तो इट इज कीपिंग द कैल्शियम लेवल इन द बोन फ्लूइड लो, ओनली 1/3. So resorption of the mostly amorphous calcium salts and phosphate occurs. ये कैल्शियम पंप हो रही है तो कैल्शियम इज बीइंग removed from the bones, वो that amorphous form of the calcium. बोन फ्लूइड में कैल्शियम कम हो रही है तो बोन से आ रहा है, इट इज बोन की बोन साल्ट रिजॉर्ब होके आ रहे हैं. So bone matrix is not absorbed in this rapid phase. Rapid phase में सिर्फ amorphous form of the calcium is removed. आसान बात है. The parathyroid hormone activates the pump, so it pumps the calcium out of the bone fluid. तो bone fluid में दोबारा bone से आ रही है calcium, amorphous form of the calcium is being resorbed and it is coming into the bone fluid. So this process is known as osteolysis. Amorphous form सिर्फ calcium and phosphate is being removed, वो भी amorphous form of calcium and phosphate. This is known as osteolysis, osteolysis. Now the slow phase, जो ज़्यादा important है. Slow phase, that is the parathyroid hormone causes increased activity of the osteoclast. ये तो already existing मौजूद हैं. It also leads to increased number of the osteoclasts. New osteoclasts are also formed. वो डेवलप करते हैं फ्रॉम दी मोनोसाइटिक सीरीज, मोनोसाइट से बनते हैं. So the salts and matrix both are resolved. ये osteoclast, they are producing acids, they are producing the collagenase or the proteolytic enzyme. That proteolytic enzyme is causing the digestion of the collagen matrix, and the acids are removing the hydroxyapatite crystals as well. So salt and matrix both are resolved and may continue for months. This is a long phase. This is the, ये ज़्यादा देर तक काम करता रहेगा because इतने osteoclasts बन गए होंगे. So the after prolonged osteoclastic activity, osteoblastic activity is also increased. Remodeling of the bone में हमने previous lecture में देखा था, normal bone बनती भी ऐसी है. Osteoclast, they eat the bone, they form the tunnels, and those tunnels are then invaded by the osteoblast and new bone is formed. So osteoclastic activity जब भी बढ़ेगी, चाहे normal osteoclastic activity है, अगर बढ़ी हुई osteoclastic activity है, that will lead to the more osteoblastic activity later on. So the after prolonged osteoclastic activity, osteoblast activity is also increased. So increased parathyroid hormone activity for years. अगर ये parathyroid hormone हम देखेंगे hyperparathyroidism में, अगर ये लंबे अरसे के लिए चले, for months and years चले, and it will cause the osteoporosis. Bones में सुराख हो जाएंगे because matrix is being resorbed and calcium salts are being removed, so there are pores in the bone which is known as osteoporosis. Prolonged osteoclastic activity will cause osteoporosis. So that was the initial effect, the primary effect, the most important mechanism to increase the blood calcium level. That is the bone resorption in two phases, rapid phase and the slow phase or the long acting phase. Then the second mechanism to increase the blood calcium level is conservation of calcium, prevention of loss of calcium in the urine. This will occur when calcium is required or when parathyroid hormone is present.
अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा है तो वो होगी तब भी जब कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, जब हाइपोकैल्सीमिया होगा. So effects on kidney for the conservation, that is parathyroid hormone causes more reabsorption of calcium in the kidney. कौन सी जगह है? Late distal tubules. कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, इसका एक्शन लेट किडनी ट्यूब्यूल्स में है, कलेक्टिंग डक्ट्स में, एंड लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल का आखिरी पार्ट और फिर उससे आगे कलेक्टिंग डक्ट्स में it causes the absorption of the more absorption of calcium, so it prevents the loss of this calcium in the urine. It adds this calcium again to the blood जो filter हुई थी, so it causes parathyroid hormone reduces the resorption. This is opposite, जिसको मैं इसको पहले, it causes the absorption of calcium. लेकिन फास्फेट का अपोजिट इफेक्ट है. बोन पे इफेक्ट अगर हमने देखा है, दैट कॉजेज द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एज वेल एज फास्फेट, बोथ आर बीइंग एडेड इनटू द ब्लड. लेकिन इन द किडनी इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बट रिड्यूसेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट. ये उल्टा इफेक्ट है. So it causes, parathyroid hormone reduces the reabsorption of phosphate and causes more excretion of phosphate in the urine. कैल्शियम को तो कंजर्व कर रहा है लेकिन phosphate is being lost in the urine अगर parathyroid hormone मौजूद है या ज्यादा मौजूद है. तो अभी हम डायग्राम में देखेंगे effect of parathyroid hormone on calcium and phosphate level is opposite. It increases the calcium level, reduces the phosphate level. So it causes decreased phosphate level in the blood. तो कैल्शियम को तो बढ़ा रहा है यूरिन में इट लीड्स टू द रिजॉर्प्शन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बट इट कॉजेज द मोर एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट. सो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, ये भी थोड़ा सा इफेक्ट है. हाइड्रोजन आयन, ये भी इफेक्ट है. एंड पैराथायराइड हार्मोन रिड्यूसेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम एंड अमाइनो एसिड. ये माइनर इफेक्ट इसके भी है. प्राइमरी इफेक्ट इज द कैल्शियम एंड फास्फेट. Now, effect of parathyroid hormone on blood calcium and phosphate level, as I said, in the urine, it causes the less excretion of calcium, more excretion of phosphate, and the result is this. Normal calcium level, whatever it is, millimoles में लिखा हुआ है, कल हमने देखा था. Normal calcium level, and if the parathyroid hormone is there, there will be increased calcium level. But at the same time, there is reduced phosphate level. क्यों? बिकॉज इंक्रीज कैल्शियम लेवल वो तीनों जगहों से आ रही है. अभी तीसरी जगह हमने डिस्कस करनी है. बोन से भी आ रही है, किडनी से भी आ रही है, तो दैट इंक्रीजेज, एंड जीआईटी से भी आ रही है. अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे. और फास्फेट क्यों कम हो रहा है? बिकॉज मोर लॉस ऑफ फास्फेट इन द यूरिन. बोन से तो आ रही है फास्फेट, बट दिस फास्फेट इज बीइंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. तो यूरिन में एक्सक्रीट करके, तो दिस इज द रिजल्ट. कैल्शियम बढ़ती है और फास्फेट कम होता है ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन की मौजूदगी में. तो तीसरा जगह जो है इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी. कल भी थोड़ा सा जिक्र हमने किया था, एक स्लाइड भी दिखाई थी, आज उसको एलेबोरेट कर देते हैं. तो इफेक्ट ऑन द इंटेस्टाइन, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन causes activation of vitamin D. Calcium cannot be absorbed from the GIT without vitamin D. And vitamin D is also has to be activated. Vitamin D हमारे synthesize होता है from the 7-dehydrocholesterol in the skin. जब धूप पे एक्सपोज होते हैं, when we are exposed to ultraviolet rays in the sun, so that 7-dehydrocholesterol is converted into vitamin D. Cholecalciferol उसको कहते हैं. But that has to be activated. It has to be converted into 125-dihydroxycholecalciferol. This is dependent upon the presence of parathyroid hormone. पैराथायराइड हार्मोन नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा. इसको कहते हैं एक्टिवेटेड विटामिन डी. So 125-dihydroxycholecalciferol formation requires parathyroid hormone. So it causes conversion of this activation of this parathyroid hormone, and वो फिर क्या करता है? It leads to the GIT की बात कर रहे हैं, effect on GIT. It leads to the formation of calcium binding protein number 1. It leads to the calcium stimulated ATPase, then an enzyme, and तीसरी चीज बनाता है alkaline phosphatase. ये तीनों चीजें मिलकर कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती हैं फ्रॉम द GIT.
कल हमने कहा बाइवेलेंट कैटायन पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, और ये बाइवेलेंट कैटायन की एब्जॉर्प्शन के लिए ये मैकेनिज्म विटामिन एक्टिवेटेड विटामिन डी इज रिक्वायर्ड, और एक्टिवेटेड विटामिन डी 3 ये 3 चीजें बनाता है, और ये 3 चीजें मिलकर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के, दिस इज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एंड दिस इज दी एटीपीएज एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज आल्सो यूज्ड, सो ऑल दिस विल लीड टू दी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस डायग्राम कल दिखाया, जो विटामिन डी कोलिकल्सिफेरोल इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन from 7-dehydrocholesterol उससे कन्वर्ट होती है, and then it is taken to the liver and it is converted, 1 hydroxyl group OH is added in the liver, it is converted into 25 hydroxycholecalciferol। इसके लिए नहीं चाहिए पैराथायराइड हार्मोन। अगले स्टेप के लिए नंबर 25 पर तो ऐड हो जाता है लिवर में, लेकिन अगले स्टेप के लिए 1 पे ऐड करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाइहाइड्रोक्सी बनाने के लिए इट इज द पैराथायराइड हार्मोन इज रिक्वायर्ड, एंड दिस टेक्स प्लेस इन किडनी। ये किडनी में होता है, पहला काम लिवर में होता है, ये दूसरा कन्वर्शन इज इन द किडनी, और 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकल्सिफेरोल बन जाएगा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 substances: calcium binding protein, calcium stimulated ATPase and alkaline phosphatase. These 3 substances are responsible for the intestinal absorption of calcium, so it will increase the calcium level. कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो इट कैन इनहिबिट द पैराथायराइड हार्मोन, ये आगे हम कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन में बात कर लेंगे। कैल्शियम जब बढ़ गया तो पैराथायराइड हार्मोन बंद हो जाएगी, नेगेटिव फीडबैक जैसे हर हार्मोन का होता है। सो दैट इज हाउ पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा? इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, यू नो इट, ऑल द प्रोटीन हार्मोन देयर रिसेप्टर्स आर इन द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन पे होगा तो सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म होगा, एंड मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म इज this cyclic AMP. So cyclic AMP mechanism is involved in this. So the cyclic AMP causes, वो cyclic AMP अब उसको डिटेल में you can write yourself, that is HR complex formed in the membrane, and then it will break down the ATP into cyclic AMP, and cyclic AMP causes secretion of enzyme and acid by the osteoclast. इनका टारगेट टिश्यू कौन सा होगा? ऑस्टियोक्लास्ट होगा और GIT होगा। So proliferation of the osteoclasts, they will proliferate, and there will be increased activity of osteocytic pump, हम जो रैपिड फेज में हम देख के आए हैं, and formation of enzyme to convert to form this activated vitamin D. ये किडनी में जो काम हो रहा है, this is parathyroid hormone is causing through cyclic AMP, that is the those enzymes are activated, phosphorylated, phosphorylation होती है अंतर cyclic AMP, so activation of the enzyme responsible for the activation of vitamin D3, 125 dihydroxycholecalciferol की फॉर्मेशन के लिए चाहिए। रेगुलेशन, कैल्शियम लेवल इसको रेगुलेट करता है, बस सिंपल एज दैट। जब कब चाहिए इसको? whenever there is hypocalcemia, this should be required. So hypocalcemia is the most important stimulus for the parathyroid hormone production. hypocalcemia इसके लिए चाहिए, जब भी hypocalcemia होगा पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा पैदा होगी। So hypocalcemia leads to hypertrophy of the parathyroid gland. जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा, कब हाइपोकैल्सीमिया का चांस होता है? कैल्शियम अवेलेबल ना हो, कैल्शियम तो अवेलेबल होती है बोन में तो काफी कैल्शियम मौजूद है। ये हाइपोकैल्सीमिया का चांस होता है आमतौर पर व्हेन देयर इज प्रेगनेंसी, लॉट ऑफ कैल्शियम इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी फीटस। उसकी जो बोन्स में कैल्शियम इस्तेमाल हुए मां से जा रही है, सो द मदर मे सफर फ्रॉम द हाइपोकैल्सीमिया, एंड मदर विल हैव द हाइपरट्रोफीड पैराथायराइड ग्लैंड, उसके पैराथायराइड ग्लैंड बड़े होंगे। And during lactation, lot of calcium is drained in milk. जब माँ दूध पिलाती है, lot of calcium, richest source of the calcium हमारी डाइट में अब भी मिल्क ही है। तो बेबी को जो मिल्क मिलता है माँ से मिलता है, तो lot of calcium is present in that milk, और वो कहाँ से आ रही है? माँ से आ रही है। तो माँ में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है किसी लेवल का, and that will cause the hypertrophy of the gland. And rickets है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, बड़ों में भी हो सकते हैं, उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ऑस्टियोमलेशिया उसको कहते हैं। रिकेट्स, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम कहां से आएगी? विटामिन डी इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। एक्टिवेटेड 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिकल्सिफेरोल बोन्स में भी चाहिए
फॉर दी रिडॉप्शन, वहाँ पे भी काम करता है। तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, उसको रिकेट्स बोलते हैं बच्चों में, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इन कंडीशन में देयर इज हाइपोकैल्सीमिया एंड देयर इज इंक्रीज साइज, हाइपोकैल्सीमिया इंक्रीज हाइपरट्रॉफी ऑफ, और अपोजिट हाइपरकैल्सीमिया हो जाए तो एक्टिविटी इज सप्रेस्ड। हाइपरकैल्सीमिया किसी वजह से हो, पैराथायराइड ग्लैंड इज सप्रेस्ड, वो एट्रोफी हो जाता है, साइज भी कम हो सकता है। सो इफेक्ट ऑफ दिस पैराथायराइड हार्मोन, एक्यूट इफेक्ट और क्रॉनिक इफेक्ट बड़ा ड्रास्टिकली डिफर है। acute effect hypocalcemia causes very strong stimulation of parathyroid hormone, पिछली स्लाइड में हम देख के आ गए। स्लाइट acute fall in the calcium, किसी वजह से कैल्शियम कम हुई है, देयर विल बी, डबल एरो मैंने शो किया अपवर्ड, देयर विल बी इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन, ये तो हम जानते हैं। बट ये रेड में मैंने लिखा है बट, अगर ये एक्यूट है, एक्यूट फॉल इन द कैल्शियम, ये बढ़ाएगा पैराथायराइड हार्मोन को। बट क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया, किसी बंदे में हाइपोकैल्सीमिया फॉर मंथ्स कम हो गया, जैसे रिकेट्स में होता है, ऑस्टियोमलेशिया में होता है, या कैल्शियम किसी और वजह से कैल्शियम की टोटल डेफिशिएंसी है। क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया इज इवन मोर, इसके एरोस मैंने ये डबल थे, ये 4 कर दिए। दैट इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द पैराथायराइड हार्मोन। एक्यूट का इफेक्ट काफी स्ट्रांग है, लेकिन क्रॉनिक का इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ये हम डायग्राम में देखेंगे। सो इवन अननोटिसेबल क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया, अननोटिसेबल का क्या मतलब है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज 9.4, अगर किसी का 9.3 है नॉर्मल, फर्ज करें 9.3 और 9.4 में क्या फर्क है, या 9.2 हो जाए तो क्या ज्यादा फर्क है, ये नोटिस भी नहीं होता। लेकिन इतनी थोड़ी सी कमी इफ एग्जिस्ट फॉर दी लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अरसे के लिए महीनों तक रहते हैं, तो अननोटिसेबल क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया, थोड़ा सा हाइपोकैल्सीमिया जो नोटिस भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर क्रॉनिक है ज्यादा, इट मे ट्रिपल और क्वाड्रुपल दी लेवल ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ये आगे डायग्राम में देखें। दिस इज एक्यूट इफेक्ट, क्या आपका कैल्शियम लेवल को थोड़ा सा कम 8 पे लाए हैं तो इतनी कैल्शियम पैदा हो, पैराथायराइड हार्मोन इतने से इतना हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। 6 पे लाए हैं तो और 6 पे लाए हैं तो ये 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। दिस रेड लाइन इज शोइंग द एक्यूट इफेक्ट, अगर एक्यूटली हाइपोकैल्सीमिया हो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हाइपोकैल्सीमिया हो, ये देखें ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल है, थोड़ा सा कम किया है हमने, थोड़ा सा कम करें, इट हैज गॉन टू दिस लेवल, यानी 9 से हमने थोड़ा सा 8.9 किया तो इट हैज गॉन टू वेरी हाई लेवल। इट मींस क्रॉनिक इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। क्रॉनिक इफेक्ट, अगर क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया हो, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन दी, तो ये देखें ये बहुत स्टीप हो गया, ये तो इस तरह जा रहा था कर्व, दैट इज दी ग्रेजुअली इंक्रीज, और लेकिन ये स्टीप इंक्रीज है, थोड़ा सा भी 1 मिलीग्राम का भी फर्क डालेंगे, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन दी पैराथायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में लगा। So these are the functions of parathyroid hormone. Next video, next inshallah, we will talk about the second hormone responsible for the some effect on the control of the calcium metabolism, and along with that we will discuss the overall control of the calcium regulation कैसे maintain होता है। next time inshallah हम करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगा, वो समझ नहीं आई, you can ask the question in the comment section, I will answer, and in videos को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और दोस्तों को अपने शेयर करवाएं उनको भी, कैन सो दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बेनिफिट, जिस हद तक बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।